Lobsang Sanghaji, former President, Central Tibetan Administration and eminent scholar, USA. I take this opportunity to introduce Sir in brief. Lobsang Sanghaji, born September 5th, 1968, is an Indian-born American Tibetan politician who is Sikyong, President of the Tibetan Government in Exile, officially known as Central Tibetan Administration, CTA, since 2012, and previously served as Kalon Tripa from 2011 to 12. Sir has received his BA Honours and LLB degrees from University of Delhi. Sir has also been offered Fulbright scholarship spot to him at Harvard Law School, and his role for his Kushi Gangtok affairs. Sir has also received 2004 Yong K. Kim 95 Memorial Prize for his excellence for his dissertation, Democracy in Distress, Is Exile Polity a Remedy? A case study of Tibet's government exile. We are absolutely honored and privileged to receive you, sir. May I now request Honorable Dr. Lobsang Sanghaji to address the gathering. Dear audience, please put your hands together to welcome Dr. Lobsang Sanghaji. Thank you very much for organizing this event. When I received the invitation, so as soon as I saw Vishwanath Karaji's name, I said, yes, I'm coming. And then later I read the title, World Parliament on Science. I'm not an expert on science. Religion, kuch bhi nahi janta. Spirituality, philosophy, nahi janta, because my background is law. And I said, मैंने ये क्या कर दिया? तो कल यहाँ थे, तो सारे लोग भाषण भी हिंदी में दे रहे थे. मैंने कहा मेरा हिंदी इतना बुरा है, मेरा बदनाम हो जाएगा. तो फिर सोचा इनविटेशन है, क्यों जाऊं? पहले सोचा काशी का घाट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया. मैंने बहुत पिक्चर देखा, जाना ही जाना है. ठीक, आ गया. गंगा का दर्शन हुआ, बहुत खुश. और अमिताभ बच्चन जी ने वो बनारस का पान बहुत मशहूर बनाया, पान भी खा लिया कल. तो ब्रेकफास्ट में मांगा क्या मशहूर है, उन्हें कचौरी है, कचौरी खाया. इनका थोड़ा पूरी अलग होता है, मेरे वो ये अलग है. कहा कि यहाँ का वो एक स्वीट मशहूर है, मिला नहीं आज, शायद लंच में मिलेंगे. जिलेबी कहाँ? हाँ, जिलेबी कहाँ? महाराष्ट्र का जिलेबी अच्छा था कल. हाँ, तो मेरा जो वो है सब पूरा हो गया, क्योंकि मैं आया और वापस आज ही जाना है. मैं यहाँ से दिल्ली जाकर वापस अमेरिका जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्लास पढ़ाना है हार्वर्ड में. तो मैं भारत में सिर्फ 100 घंटा से कम के लिए आया हूँ, क्योंकि विश्वनाथ कारक जी ने मेरे को इन्विटेशन किया. और 10 दिन पहले मेरी एक एक्सक्यूज भी दिया था, राहुल को कहा कि मेरे को आना है यहाँ, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कम है ना. वो कहा कि आ जाओ, जिलेबी मिलेगा. तो मैं यहाँ हूँ, तो सोचा क्या कहूँ, कि बात क्या करूँ. तो कल सुना ड्युअलिटी के बारे में, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. सुबह बहुत प्रार्थना किया. परम पावन दलाई लामा जी है, थोड़ा वो है, सोच अलग है. मैं भी तिब्बतन हूँ और हम चाइनीज के साथ विरोध करता है. सोचा मैं ये कॉन्फ्रेंस आ गया हूँ, विरोधी शायद मैं ही हो जाऊंगा, क्योंकि सब प्रार्थना करते हैं. परम पावन दलाई जी ने कहा कि जब चीन का सिपाही तिब्बत को कब्जा करने के लिए आया था, हमने इतना प्रार्थना किया, मगर नेशनल डिफेंस के लिए कुछ फायदा ही नहीं हुआ. सब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना अच्छा है, दिल के लिए शांति मिलता है. वही है, सब संडे जाते हैं प्रार्थना करते, फ्राइडे जाते हैं प्रार्थना करते, वेडनेसडे जाते प्रार्थना करते. मगर प्रार्थना करने के बाद मंडे से फ्राइडे हम पाप के जब वो जिंदगी के सामने चले जाते हैं, फिर एक हफ्ता पाप हो जाता है. फिर सैटरडे को रियलाइज हो जाता है मैंने बहुत पाप किया. फिर संडे को भगवान के आगे जाते माफ मांगते हैं, है कि नहीं? तो ये क्यों? अब बहुत लोगों ने कहा, ये मानता हूं, काशी तो स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया है, भारत है, ज्ञान का सेंटर है. अब ज्ञान का सेंटर है, ज्ञान है, मगर ज्ञान को ये हकीकत हो रहा है, नहीं हो रहा है. प्रैक्टिकल हो रहा है, नहीं हो रहा है.
इनका इंतजाम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम तो अभी तक रोज कहते हैं, सब कहते हैं, ईस्ट में हमारा नॉलेज है, विजडम है, वेस्ट मटेरियल है, हम स्पिरिचुअल है। वेस्ट में बहुत कठिन है, क्लाइमेट क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, यूक्रेन वॉर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जितना भी वॉर हुआ है ज्यादा वेस्ट में हुआ, वो भी है। और मेंटल क्राइसिस है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस सबसे ज्यादा है। इतने लोग सुसाइड कर रहा है। अब क्या हो रहा है? जितने भी मटेरियल डेवलप वेस्ट में हुआ वो एशिया में हो रहा है। हम खुद कह रहे हैं कि एशिया का सेंचुरी आ गया है। एशिया में क्या हो रहा है? वो जो जितने भी वेस्ट का प्रॉब्लम है एशिया में हो रहा है। क्लाइमेट क्राइसिस एशिया में है, वाटर क्राइसिस एशिया में है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, ताइवान के ऊपर होने जा रहा है, इंडो चाइना का बॉर्डर, इंडो तिब्बत का बॉर्डर है, उसके ऊपर होने जा रहा है, सब आ रहा है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एशिया में है, भारत में है। कितने फार्मर्स लोग सुसाइड कर रहा है, कितने यूथ लोग सुसाइड कर रहा है। जो हम वेस्ट को दिखा के कहते हैं कि मटेरियल डेवलपमेंट है, आपके पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है, स्पिरिचुअल होने से मन का शांत होगा, सुसाइड नहीं होगा। सुसाइड हो रहा है, सारे एशिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है। तो हमारा ज्ञान है, ये जमीन पे क्यों नहीं आ रहा है? सवाल ये है, जमीन पे आना चाहिए। तो परम पावन दलाल जी कहना है कि देखो, हम बुरे लोग ज्ञान के बारे में बात करने से कुछ फायदे नहीं है। बुरे लोग वही करेंगे, संडे में प्रार्थना करेंगे, मंडे से फ्राइडे पाप करेंगे, फिर सैटरडे में गिल्ट होंगे, फिर गिल्ट फील करेंगे और फिर संडे में प्रार्थना करेंगे। ऐसे वो परम दलाल जी कहा है कि नहीं, अब हमें बच्चे को सिखाना है करुणा क्या है, फॉरगिवनेस क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, बच्चे को सिखाना है। बच्चे का दिल साफ है, अभी उनको हम बना ना सकते हैं। ऐसा नहीं है, मनाना भी सकता है। बुरे लोगों को एक दिन के लिए मनाएगा, पर 5 दिन फिर पाप करेगा। बच्चे लोगों को दिल को मनाने से, दिल को पढ़ाने से उनका दिल ब्रेन को छू लेता है, हार्ट एंड माइंड कंबाइन हो जाएंगे और वो लीडर होंगे करुणा वाला लीडर। देश के लीडर ऐसे होंगे, इंडस्ट्री के लीडर ऐसे होंगे, टीचर भी कंपैशनेट टीचर होंगे। इसलिए उन्होंने सी लर्निंग करके, सोशल, इमोशनल, एथिकल लर्निंग करके करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है। वो इंप्लीमेंट किया है 6 कॉन्टिनेंट्स में, 144 कंट्रीज in 22 languages. This is taught in high school, primary school. उनको सिखाया है। उसमें क्या लिखा है? अब करिकुलम, फुल करिकुलम, आई एम जस्ट गिविंग यू अ पैराग्राफ ओनली। उसमें क्या है कि we must recognize shared humanity is more important than our differences. Actually, differences can actually be a source of strength when we approach them through compassion. Or we must teach them, young people, to be active listener, to treat others with respect, to foster love, and to have a sense of purpose in life. अभी जो करिकुलम एजुकेशन सिस्टम है वेस्ट में जो है, इंडिया में वही है, एशिया में वही है. They teach you about career, but they don't teach you about purpose of life. आप इस दुनिया में क्यों हो, वो नहीं सिखाता है, उनको सिखाना चाहिए. हम प्रॉब्लम सब बताते हैं, पॉवर्टी है, वो है, सब प्रॉब्लम. Everybody says problem. In teachers, school also they tell you about the problem, but they don't teach you the root cause of the problem. इस करिकुलम में they teach you the root cause of the problem. कहाँ से आया, क्यों आया, उसको निपटना पड़ेगा. That is in this curriculum. And also about equitable society, about compassionate society, or especially responsibility. What you say, what you do will impact others. जो हम करेंगे, कहेंगे, वो दूसरे को impact करेंगे. क्योंकि आजकल की दुनिया में जो भी चाहे कहते हैं, जो भी चाहे करते हैं, सोचते नहीं उसको उनको क्या होगा. This is being taught. So now this sea learning, I'm very glad Vishwanath Karaji has built a dome of peace where all the masters are there, and it's fitting that it's at MIT University, so that all the students can relate to the knowledge. Now we must take this course
And it is already implemented. Actually, Delhi government has implemented this C-learning as well, curriculum happiness. Worldwide is happening. And I hope I have come to convey this message that these curriculum be also introduced in various parts of India as well. Because soon test is coming. What we talk about the West will happen in Asia. भारत सरकार कहता है हमें भारत in 2047 में number one होना चाहिए क्योंकि when we celebrate 100th anniversary हमें number one होना चाहिए. सब मुमकिन है, सब we all agree with that, right? But चीन सरकार भी कह चुका है 1949 में उनका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का भी 100th एनिवर्सरी होने वाला है, उनको भी नंबर वन होना चाहिए. अब देखो नंबर वन एक ही होगा, अभी दो है एशिया में. अब कैसे निपटी? There will be bound to have conflicts. There will be war in Asia. How does war happen? You study industrial revolution in Europe. Simple logic. पहले पैसा कमाते हैं, you become rich, फिर बंदूक खरीदते हैं क्योंकि पैसा को प्रोटेक्ट करना है. अब उस तरह वो जो आपका नेबर को भी पैसा कमाया, वो भी बंदूक खरीदते हैं. अब बहुत बंदूक हो गया, आप सोचने लगा मेरे पास पैसा उतना, उसके पास ज्यादा है, उससे ज्यादा मेरे को होना है, किसी और को लूट लेता है. कोलोनियलिज्म ऐसे फैल गया, इंपीरियलिज्म ऐसे फैल गया और झगड़ा करते रहा. यूरोप में 30 years war, first world war, सब world war, logic is very simple. You become rich, you buy guns, you fight. अब क्या हो रहा है? मिडिल ईस्ट में 40 years ago they discovered oil, they become rich, और बंदूक खरीदा, अब झगड़ा हो रहा है. अब मिडिल ईस्ट से ज्यादा बंदूक कहां खरीद रहा है? एशिया में. एशिया रिच हो रहा है, अब सब बंदूक खरीद. Number one spender of defense, China. Number two, India. Second largest army in China. Third largest army, India. And Indonesia, Japan. You just name it. क्यों? सब रिच हो रहा है, और सब बंदूक खरीद रहा है. अब झगड़ा करने वाला है कि नहीं? अब हमारा भारत का ज्ञान कहां है? सवाल ये उठता है. ज्ञान है, अब दिखना चाहिए. अभी तक तो हम लोग सबने कहा वेस्ट, अब you have all the money but you are in the wrong direction क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है. हम तो कहते रहते हैं कि हम काशी से कहूंगा ज्ञान हमारे पास है, जो वो कर रहा है हम करेंगे. सुसाइड यहाँ है कि नहीं, वाटर क्राइसिस यहाँ है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ है. वो कहे कि आपने इतने साल से कहा कि ज्ञान आपके पास है, हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम रॉन्ग डायरेक्शन किया. आपके पास धन आया तो आपका ज्ञान कहाँ गया? तो हमारा इंडिया जीडीपी देखिए, सुसाइड का पर कैपिटा क्या है? सॉरी टू इंटरप्ट. नहीं, let me finish. In US, per capita in India, that we have to look at, not the number. No. What I'm trying to say is, no, I'm not saying. What I'm trying to say is, yes, suicide rate is high in the West, but suicide rate is increasing in Asia as well. And it will keep increasing if GAN is not implemented. So this is the test. So why it's not happening is because we have not taken the education to the children. They can be educated. Their heart is pure. If they become compassionate, when they become leaders, we will have peaceful Asia, we will have peaceful India, and we will have peaceful world. So that's the direction we must go. With that, I end my speech. I'm staying here less than 100 hours just to convey the message. So Vishwanath Karachi, MITG, and I feel I'm glad I got a side seat. Because sitting with all the eminent scholars and learned philosophers and spiritual masters, I'm glad मेरा थोड़ा karma, I get blessed that way. मेरे को जितना भी नजदीक है उससे ज्यादा blessing होगा ना, blessing हो गया. I go purified. मैं कहूँगा काशी में गया, मैं purified होके आ गया हूँ. Thank you. Thank you so much, Honorable Dr. Loksain Sangeli, for your kind words. Now it's time to invite distinguished speaker, Honorable Acharya Lokesh Modi ji, founder Ahimsa Vishwa Bharati, New Delhi. I take this opportunity to introduce Acharya Lokesh Modi ji, a versatile thinker, poet, social reformer, has been continuously making efforts for national character building, development of human values and establishing non-violence and mutual cooperation in the society for the last 39 years.
He has traveled on foot about 20,000 kilometers throughout the country for removing social evils, for the propagating moral values. Sir has started a strong movement against social evils like abortion of female child, drug addiction, environmental pollution, and so on. Sir is well read in Prakrit, Sanskrit, Hindi, English, Gujarati, and many more such languages. Sir is a writer and has written more than a dozen of books in prose and poetries. Sir has received many honors, to name a few: National Community Harmony Award, Ambassador of Peace Award in 2014, Ethical Honor of Gulzarlal Nanda Foundation, and many more like this. May I now invite, with all my honor, Acharya Shri Lokesh Muniji. Please put your hands together to welcome our distinguished speaker to the dais. MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मंच पर उपस्थित संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, विभिन्न धर्मों के शीर्षस्थ धर्माचार्यगण, उपस्थित बंधुओं और बहनों, चूंकि उद्घाटन सत्र में मैं अपना वक्तव्य दे चुका हूं, इसलिए मैं लंबा समय नहीं लूंगा। समय सीमा में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। अभी मेरे से पूर्व भिक्खु संघ सेना जी ने और अमेरिका से समागत हमारे विद्वान स्कॉलर, उन्होंने बड़ी मीठी हिंदी भाषा में अपनी वक्तव्य यहां प्रस्तुत किया। जब हम यूनियन ऑफ साइंस एंड रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी along with bring peace and harmony to the mankind, स्वामी विवेकानंद, वास्तविकता तो यह है कि अलग अलग पंथ हैं, धर्म तो एक ही है। धर्म है क्षमा, मैत्री, करुणा, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना। किंतु कठिनाई यह होगी कि हमने धर्म और संप्रदाय को एक कर दिया, जबकि संप्रदाय है लिफाफा और उसके अंदर रखा हुआ मजमून। दूसरी रूपक की भाषा में कहूं, एक फल का गुदा है, एक छिलका है उसकी सुरक्षा के लिए। धर्म और संप्रदाय ये दो अलग चीजें हैं। जब ये स्पष्टता होती है तो जो कहा जाता है ना कि धर्म के नाम पे झगड़े हैं, संप्रदाय के, पंथ के, मेरा पंथ, मेरा मजहब श्रेष्ठ है, मेरा विचार श्रेष्ठ है, जहां यह भाव आता है वहां पर संघर्ष बढ़ता है। और जहां पर अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप सामने आता है वहां पर कभी भी झगड़ा खड़ा नहीं होता है। और जब अध्यात्म होता है तो विज्ञान से भी कोई विरोध नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, न कि विरोधी। सत्य की खोज का रास्ता अध्यात्म है। वैज्ञानिक लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में अनुसंधान करते हैं और हमारे ऋषि मुनि, भगवान महावीर ने तो अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना डाला और उन्होंने जिस सत्य की खोज की, अभी महान स्कॉलर केरल के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब अभी वक्तव्य दे रहे थे इस सत्र से जस्ट पहले, उन्होंने जिस अनिकांत दर्शन की बात कही,
वो उन्होंने उसी अध्यात्म की सत्य की खोज के दौरान उसे प्राप्त किया। आज अपेक्षा है, हम सबका दायित्व है कि हम धर्म को अध्यात्म से जोड़ें, धर्म को विज्ञान से जोड़ें, और बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं। अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से धर्म का वो तेजस्वी स्वरूप समाज में सामने आएगा, और सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती है, वो उस मार्ग के द्वारा संपन्न हो सकता है। और बंधुओं, हार्मनी की बात करें, मैनकाइंड की बात करें, ये सभी तभी संभव होता है जब तक हमें भेद विज्ञान की अनुभूति नहीं होती है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से बना हुआ पर आखिर सोना सोना। ये भेद विज्ञान की अनुभूति अध्यात्म के स्पर्श से आती है, और जब अध्यात्म का अवतरण होता है तब स्व और पर की भेद रेखा खत्म हो जाती है। भला कौन किसके प्रति अन्याय करेगा, कौन किसके साथ चीटिंग करेगा? अरे वो तू ही तो है, वो तुम्हारी जैसे आत्मा है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है। मतभेद जब मन भेद का रूप धारण करते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। विरोधी विचारों को सुनकर के मन में खेद नहीं हो, और अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव मानव में मतभेद स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो, और उसका प्रयास मैं समझता हूं भाई विश्वनाथ जी करार जिस रूप में करते हैं। पूना में भी अनेक बार स्टूडेंट पार्लियामेंट में कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। टीचर्स कांग्रेस के कार्यक्रम में दिल्ली के विज्ञान भवन के सेंट्रल हॉल में इनका एक ही प्रयास रहता है कि विभिन्न धर्मों को एक साथ से आसन से चिंतन, और इसलिए मैं इनका अभिनंदन करना चाहूंगा, और आज इस मंच से एक उद्घोषणा भी करना चाहूंगा। हमारा अहिंसा विश्व भारती संस्थान जो भारत में और भारत के साथ अमेरिका में रजिस्टर्ड है, अहिंसा विश्व भारती फाउंडेशन, उन्होंने उनकी पिछली मीटिंग के अंदर यह निर्णय लिया गया कि डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाए। अब वो कार्यक्रम भारत की राजधानी दिल्ली में होगा या महाराष्ट्र के मुंबई में होगा, वो हम दोनों की सुविधा अनुसार कार्यक्रम को तय करके आपको सूचित करेंगे। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रयास है, इन प्रयासों की निरंतरता जरूरी है, और इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात। तो आइए बंधुओं, हम सब मिलकर के इस महान यज्ञ के अंदर आहुति दें, इन्हीं शब्दों के साथ ओम और हम। Kindly give a standing ovation to Acharya Lokesh Muli ji. Dear audience, a huge round of applause, please. I request everyone to give a standing ovation to Acharya Lokesh Muli ji. Thank you sir for your words of wisdom. Thank you so much. Thank you Acharya ji. May I now take this opportunity to introduce our next distinguished speaker, Honorable Swami Jain ji, a motivational speaker, social reformer from Akshardham BAP Sri Swaminarayan Mandir, Ahmedabad. Dr. Jain Swami
is a motivational speaker and social reformer from Akshardham. Sir works for BAPS, which is a social organization that improves society by promoting the growth of people. Sir has completed his mechanical engineering from Birla Vishwakarma Mahavidyalaya, Vallabh, Vidyanagar. Sir has given motivational speeches at different seminars in multiple countries, including but not limited to New Zealand, Europe, Canada, the US, and England. Sir covers a wide range of niches such as stress, work life, career, education, etiquette, attitude, and much more. Sir started off his career as a social reformer at Akshar Purushottam Mandir, a social organization that promotes individual growth, and he has discussed plenty of inspirational topics that has helped many people to grow and succeed in their profession. Sir has traveled to more than 20 countries and spoken on different genres from career to stress. Sir is a vivid reader, and I must note that what he mentions that reading is only hobby that nurtures. Sir is recognized as a Swami of BAPS Sanstha, and he has not to miss out. Sir had received his training from the Pramukh Swamiji as his guru. May I now, with my honor and privilege, invite Swami Gyanvatsalji to the dais. Dear audience, please put your hands together to welcome Swamiji to address the gathering. गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यम् उच्यते भवबन्धनात्. With prostrations at the divine feet of Bhagavan Swaminarayan, my Guru Hari, Param Pujya Pramukh Swami Maharaj, and my Pragat Guru Hari, Param Pujya Mahant Swami Maharaj, my heartiest namaskar. Good afternoon. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, and Jai Swaminarayan. Especially to the founder president of MIT World Peace University, Dr. Vishwanath Karatji, the organizer of this conference. Distinguished guests and spiritual luminaries on the dais, and all the science and religion loving people sitting in the audience. Well, the theme of today's conference, the 9th World Parliament of Science, Religion, Spirituality and Philosophy, to promote the culture of peace. Based on the ethos of G20, Vasudhaiva Kutumbakam, the theme has been perfectly selected because today in the 21st century, we need a combination of science and spirituality. As the great scientist Albert Einstein used to rightly say, that science without religion is lame and religion without science is blind. So we need a combination of both. If we don't have this combination, what happens? As my ex-speaker, he rightly mentioned that right from early childhood we need to teach them the values of spirituality. Only then with the combination of science that they can bring peace and harmony upon this earth. You would be surprised to know that more than 30,000 scientists all over the world are busy in making bombs and missiles. जो बंदूक की बात है आपने बहुत की, जो बात बहुत सही है. 30,000 scientists all over the world are busy working 12-16 hours a day making bombs and missiles and weapons of mass destruction. So these weapons are not made by illiterate people. They are made by some of the finest graduates from some of the finest universities in the world. But they didn't have the touch of spirituality, the influence of spirituality and religion in their lives. So they are making bombs and missiles to wipe out human populations from upon this earth. So science needs spirituality. So we have ethical scientists. Imagine if these 30,000 scientists during the times of Corona had left aside their job of making bombs and trying to find some solutions for Corona, the world would not have lost 2 years.
but they did not get that ethical sense of helping mankind just for the reason that they did not have the touch of spirituality during their science graduation days. This conference is meant for that. This thought process is meant for that. Many years back in Pune, more than about 50 vice chancellors of different universities of our country that come together to discuss why we are producing educated monkeys. And the conclusion after 3 days of brainstorming sessions was, that we need to introduce religions, philosophy, spirituality in our curriculums in schools and colleges. So right from early childhood they should be bred like that. But many years back this thought process now has fructified and we see it well in NEP 2020 that would give us ethical education. It's a wonderful step by the government of India which is now very decisive. It is a wonderful step by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi, which will not only accelerate the path of India towards being a developed country by 2047, it will also accelerate the path of India by becoming a Jagat Guru. India will become a developed country, India will become a superpower, and India will become a Jagat Guru because we have those ethos. And we are talking of this from a place, this is Varanasi, Kashi, Banaras, the oldest city, the oldest inhabitation of this world, which the world recognizes. So science and spirituality should have a combination. Great scientists have talked about this. Scientist Werner von Braun, who discovered this, the Saturn rockets which put satellites into space. He writes in his biography, I am quoting him word to word and letter to letter, that only with God reinstated in the hearts and minds of people will He protect us from the dangers of technological revolution. On the other hand, spirituality has a big role to play. Many a times I say that modern science is increasingly proving the methods, the thought process of spirituality right. For example, Shankaracharya ji taught us Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Mudmate. Chant the holy name of God for peace. The same thing is proved by science. At the University of Philadelphia, at the University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg, Dr. H.G. Goin, they jointly experimented. Absolutely a scientific experiment on the chanting of the holy name of God, that is Bhaj Govindam. By psychoneurosoftwares, they experimented on 4,000 people. They had their MRIs, they had their mind mapping. They were asked to chant the holy name of God in whichever form of God that they believed in. For about like 12 minutes, experiment conducted for 8-10 times, for 5-7 weeks. Again by psychoneurosoftware's version 2.0, again they are chanting, during the chanting of the holy name, they are mind mapping and their MRIs were done, and the conclusion report states